welcome once again to our YouTube channel, and today we are going to discuss the class 10th chapter first, resource and development. Before starting the chapter, as I am going to discuss something about the resources. What is resources? So that resources means that the everything which is essential for us and which is useful for us, for the human beings, either it is in natural form or it is made by the humans. It is termed as the resources, which makes our life satisfactory. As we see in the room we saw the many things which has been made up by the resources. So these resources are in a limited. So let's today we are going to start this chapter. So let's start it. So the first thing is given that everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technology accessible, economically feasible, and culturally acceptable. So it means that everything which is available in environment and it is culturally, economically, and technologically acceptable. So and these resources are going to satisfy our needs. So the process of transformation of the things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and the institutions. So here guys, institutions means that the institutions run by the human beings. So indirectly it relating the humans and with the adoption of the technology which has been invented by the humans. So it's showing a interactive relationship between the nature, technology, and the institutions. It means whatever the things we got from the nature with the help of the institution, with the help of technological advancement, equipments, machine and tools, we made the things which is essential for our life and which resources make our life easier. So human beings interact with nature through technology. So if we are the human beings and if we are going to interact with the nature with the help of the technology and create institution to accelerate their economic development, the things is clear here that whatever the resources we are getting with the help of the technology, we create the institutions to accelerate. These resources are also useful for our economy also. So resources is also useful for our economic development. So resources are a function of human activities. जो resources है वो एक तरीके से कह सकते हैं human beings का एक function है, ठीक है. ह्यूमन बींग्स की जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें विद द यूज ऑफ रिसोर्सेज हम लोग ये सारी चीजें लेते हैं. एंड ह्यूमन being themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into the resources and use them. That means directly or indirectly we found the resources and we touch with the resources, we utilize the resources for satisfying our needs and also to those activities which are useful for economy also. It run the whole world's economy also. It means resources, how the resources are important for us. तो रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए. एंड वन मोर थिंग दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सो आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि रिसोर्सेज कितने कैटेगरीज ऑफ द रिसोर्सेज आर जो होते हैं हमारे वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं या कितने एरियाज में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द कैटेगरीज ऑफ द रिसोर्सेज. हियर we classify the resources on the basis of 4 ways. So the first is we divide these resources in 4 categories. First is your on the basis of origin, second is your on the basis of exhaustibility, third on the basis of ownership, and fourth is your the status of development, on the basis of status of development of the resources. So first is on the basis of origin. If we talk about the on the basis of origin,
So here the resources has been categorized into the two category. First is your biotic and second is your abiotic resources. So what are biotic resources? Biotic resources are the resources which obtained from biosphere and have a life, such as human beings, flora and fauna. So on the basis of origin, so the resources occurs in the two form, either the naturally, all the resources comes naturally, but some resources have the life, some resources did not have the life. So the resources have a life are known as, comes under the biotic resources, like as human beings, all the flora, fauna, these are comes under the biotic resources. Second is your abiotic resources. Abiotic resources are those resources which does not have life but they occur naturally and they cannot reproduce themselves. यानी कि abiotic resources जो हैं वो खुद से reproduce नहीं हो सकते हैं. It also have a natural process, but like as human being, the flowers, like as the animals, these three can reproduce themselves, but abiotic resources are not reproduce themselves. Second is your on the basis of exhaustibility. So resources are also classified on the basis of exhaustibility. That first is your renewable and second is your non-renewable resources. So resources which can be renewed or reproduced by physically, chemically and mechanically process. That means the resources which can be reproduced or renewed by physically, chemically and mechanical process are known as renewable resources. Like as for example, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा renewable resources में आपका आ जाएगा वाटर, एयर, सोलर एनर्जी. दीज आर कम्स अंडर एन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से आ जाएंगे? दीज अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम्स, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रिन्यूड एंड दे गॉट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज. यानी कि वो रिसोर्सेज जो एक बार यूटिलाइज करने के बाद फिर से आपके फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले कोल, पेट्रोल, ये इस तरीके के जितने भी मेटेलिक रिसोर्सेज वो भी इसमें क्या हो जाते हैं, एक बार यूज करने का फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? डेट रिसोर्सेज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. थर्ड इज द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. दैट फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. Individual resources are those resources which are owned by individual, like as your home, your car, है ना, your furniture. जो आप रिसोर्सेज को खरीदते हो या खुद भी करते हो वो आपके खुद के लिए है. यानी आपका खुद का खेत, आप उस पर प्रोडक्शन करते हो, कोई बाहर का आके प्रोडक्शन नहीं करता है उस फार्म पे, तो वो क्या कहलाएगा? जिसकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी, वो हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाएगी. सेकंड इज योर कम्युनिटी रिसोर्सेज. सो कम्युनिटी रिसोर्सेज इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. यानी कि वो रिसोर्सेज जो पूरी कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए एक्सेसिबल हो, लाइक एज योर टेम्पल, स्कूल, चर्च, एवरीथिंग, है ना, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसको यूटिलाइज कर रही है. दैट कम्स अंडर द कम्युनिटी रिसोर्सेज. Third is your national resources. National resources, that means all the resources which comes under the nation. ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जो आपके कंट्री के अंदर में आते हैं वो हमारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्सेज. इसमें आपके इंडिविजुअल कम्युनिटी वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे और ये भी बताते रहे जैसे कि रोड्स हो गई, रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गई, ये सब किस कैटेगरी में आएगा? नेशनल रिसोर्सेज में आएगा. एक और चीज़ है जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना ये दिस इज आवर इंडिया, है ना, इंडिया के जो कोस्टल लाइंस में जो ओशियन है ना, मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, तो इसका जो डिस्टेंस है ये भी एक सीमित एरिया तक ही हम लोगों का नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है. दैट इज योर 12 नॉक्टाइल.
12 नॉक्टाइल, ध्यान रखिएगा 12 नॉक्टाइल, जिसका सॉरी नॉक्टाइल नहीं है, नॉटिकल, 12 नॉटिकल, तो जिसका अगर हम किलोमीटर में निकालेंगे तो वो हो जाएगा 22.2 किलोमीटर का जितना भी एरिया आता है ओशियन का, वो हमारा नेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आएगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? द रिसोर्सेज आर अंडर कम्स द अपना ऐसे कह सकते हैं कम्स अंडर द जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आ जाती है। जैसे कि there are international institutions which regulate some resources, for example oceanic resources beyond the 200 nauticals, यानी कि यहाँ पे तो नेशनल के लिए तो 12 नॉटिकल्स है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए 200 नॉटिकल्स, तो इसके लिए हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है उस पर्टिकुलर जगह पे या उस एरिया के अंडर में जहाँ तक ये आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों को एक परमिशन लेनी पड़ती है एंड इट्स कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। और हम बगैर इनकी इजाज़त के वहाँ पे अपना कोई भी व्यवसाय भी नहीं कर सकते, तो डेट कम्स अंडर द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो फर्स्ट इज योर पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी कि कोई रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर रीजन में मिल रहा है लेकिन हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज, लाइक ए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इन द राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, इन सब जगहों पे हम लोग इनका बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग, हम अपनी उस एफिशिएंसी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके के जो रिसोर्सेज होंगे वो हमारे कम्स अंडर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकेंड इज अवर डेवलप्ड रिसोर्सेज, दैट मीन्स विच आर सर्वेड, द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. That means वो रिसोर्सेज जिसके बारे में हमें पता है कितनी मात्रा में सर्वे हुआ है, क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की बेसिस पे हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकें, वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। थर्ड इज अवर स्टॉक, तो मटेरियल्स इन एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but human beings do not have the appropriate technology to access these included among stock, यानी कि जो resources environment में मौजूद है ना, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो हमारी wants को, human needs को satisfy कर सके, but we did not have a appropriate technology to utilize these resources, that comes under the stock. Now reserve is also like as the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started, यानी कि रिजर्व रिसोर्सेज जो हैं वो सब पार्ट है, सबसेट है आपका स्टॉक का, और इसके अंदर में क्या होता है कि हम लोगों के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, और अभी तक उसका इस्तेमाल भी हम लोगों ने शुरू नहीं किया। तो ये रिसोर्सेज हमारे किस में कहलाए जाएंगे? रिजर्व रिसोर्सेज। सो क्लास, दिस इज़ अबाउट द टुडेज क्लास एंड टुडे मैं आज सिर्फ इतना ही वीडियो बनाऊंगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप लोगों को जानकारी दूंगा उसमें डेवलप्ड रिसोर्सेज को डेवलप क्यों ज़रूरी है, इंडिया ने इसके लिए क्या क्या प्लान कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे उसको। तो वन मोर थिंग, अगर इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, like the video and mention the comment also. So thank you for watching my channel.